Welcome back, folks. You are watching Playoffs Day number 1 of the eISL Season 2, brought to you by Nodwin Gaming. I'm Fixes, joined along by TTR as we are en route to our first semi-finals. And this is going to be between Bengaluru FC taking on FC Goa. Now, this is a matchup that has even happened in the past, but before we, move in the nitty-gritty details of this matchup, let's take a quick look at the schedule that we have lined on for you. We're already done with two matches of the evening. We are heading on to the match number 3. That is BFC and FC Goa. TT, how are you feeling about this? देखिए बेंगलुरु एफसी का आज ऑलरेडी एक गेम हो चुका है तो प्रेशर उसमें भी काफी ज्यादा था तो दोनों ही बहुत ज्यादा प्रेशराइज दो गेम जब एक दिन में आ जाता है तो कहीं ना कहीं होता है कि आप जो है वो कंट्रोल खो देते हो या फिर लाइक आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है लाइक आप इतना हैंडल नहीं कर पाते हो बट वो बीच में गैप मिला क्या मिला है और वो गैप क्या काफी है वो देखना होगा और वो अभी भिड़ने किसके साथ जा रहे हैं एफसी गोवा के साथ जो अभी तक इस पूरे सीजन में एक गेम भी नहीं आ रही है तो प्रेशर तो दुगना हो चुका है Yeah, pressure is, of course, not just doubled, it's quadrupled or, of course, breaking the roof tops over here. But, coming back again for the viewers, we've got to make this quick announcement that this semi-final matchups that we have for you is going to be divided between two legs. But we'll talk more about it. But before that, let's take a quick look at the head-to-head of both these clubs, how they've fared up against the other teams and the previous matchup, in fact. And this was a very close one. The first game ended as a draw between CJ and V Sharma. However, when it came down to co-op, V Sharma and Adizima absolutely crushed CJ and Shagnik and Adizima. He's been one of the best players in the eISL so far, and living up to his name, he managed to best Shagnik. So yes, FC Goa had a good time against Bengaluru FC, but this is a different Bengaluru FC. This is a Bengaluru FC that has sort of gotten himself from the rumages of the defeat, has gone on to defeat Hyderabad FC and now have secured a berth into the semis. And I feel like it's very difficult to stop them from here onwards. It's going to be so difficult for the boys from FC Goa. But right now, what we're going to do is ask the players what's the atmosphere around. So, Sriyash, what's up? What's going on between the players? Right, guys. Okay. All that's going on is the fact that we have the third game of the day that's going to happen. I have Vanshaj here with me from FC Goa and I have CJ from Bengaluru FC. And I'll start with you, CJ. You've already played one game today. Do you think that gives you a bit of an advantage going into this game, considering that you're already warmed up, you already know the surroundings? I don't think really, to be honest, it gives an advantage because we played a game like three hours back. So yeah, I don't think it's an advantage. It's a fair game for both of us now. Speaking of advantages, Vanshaj, you've gone unbeaten throughout the season. At the back, we can see your coach Stu over there. You're only one of two teams who has a coach this season. How helpful has he been in terms of guiding you and getting you to the place you are right now? Like Stu has been really helpful, I feel, because he just polishes my skills. The skills I lack, the mental strength you need while playing a competitive game at such a high level. So Stu has been really helpful, I feel. What particular part of your game do you think he's really improved? I feel it would be the dribbling in the final third of my opponent. He just polished that in a sense because, I was really struggling with that. I was just pressing X. But he helped me with that dribbling part. So yeah, it has been really helpful. And CJ, lastly, you're going to be playing a team that's been unbeaten the entire season, and there's going to be moments of pressure during the game. As a FIFA E athlete, how do you deal with that pressure and remain calm and not lose your head, or in layman's terms, get FIFA rage? Like the league stage is now done. Like all four teams are here fighting for the first spot. So we won't think about if they are unbeaten or beaten. We just focus on the next step. All right, fighting words from both of you gentlemen. All the best for the game, and may the best team win. Yes, you can shake his hand as well, of course. Guys, between the both of them, it's a very level-headed perspective that's been given. Both are young lads, but both extremely proficient at their craft. You can watch the game on the eISL Gaming YouTube channel, as well as the Indian Super League YouTube channel, as well as the YouTube channels of the respective clubs. It's going to be a cracker. Back to the casters. All right. So emphasizing on how much a coach has had to
do in has had to play such a pivotal role in FC Goa's unbeaten streak over here, and rightfully so, right? It's more about TT. I feel the composure that he puts on the table. He kind of encourages the players, works on those small nuances that could have been improved, and I think he's done a phenomenal job at that. But let's take a look at today's matchups. Who's going up against who? Are we gonna see CJ and Vanshaj go up against each other? Yes. And then it's gonna be Shagnik and Adisima. So Bengaluru FC, they've already announced that what has happened in the past in the league stages, we do not care, right? But now today, this is the day where history might get rewritten. So Shagnik, will he get his revenge? Let's find out. लेट्स सी क्या वो ले पाते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए रिवेंज की अगर बात करें तो रिवेंज तो इधर हर एक क्लब लेना चाहते थे एफसी गोवा से। बट ठीक है, लाइक कोई दो ही क्लब को मौका मिल सकता है, या फिर कोई एक क्लब को। अगर इधर से बेंगलुरु एफसी अपना गेम जीत के जाते हैं देन तो इधर ही कहानी खत्म हो जाएगा, और एल्स इधर बहुत कुछ हो सकता है। बट देखिए आज है डे 1 और आज हम लोग को सिर्फ लेग 1 देखने के लिए मिलेंगे, सेमीफाइनल एंड उसी के साथ साथ सेमीफाइनल 2 के दोनों ही गेम के जो फर्स्ट लेग है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक चीज फिक्सेस जो कि हम लोगों को पता चला कि लाइक एफसी गोवा की तरफ से उनके कोच भी है, मे बी ये एक पॉइंट हो सकता है जिसके वजह से उनको अभी तक कोई छू भी नहीं पाया इस पूरे eISL सीजन 2 के अंदर। Yeah, and I think he's got such an important role, right? Especially when we were talking about him. Now, this time he's there in person. I think this was one of social media stories of Adi Zima, where he said that his coach has traveled all across the world to be with them during the playoffs. And I think it kind of gives you a huge morale boost when you've got so much experience being exchanged over here, and just to work on the finer things, finer aspects of a player, not just inside the game, even how they cope with pressure. Because well, one church, it was a tough match against CJ. He did manage to end it as a draw, but the co-op matchup for Bengaluru FC, somewhere they had been looking a little slim there. They have to make sure that this time the co-op works out just as the way it did against Hyderabad FC. But CJ, I think he's gonna go out and win his first match of the night on an individual basis. Of course, the players just waiting to get this match started, and in the next few minutes, it is going to be game on, kickoff, and let's find out who gets the ultimate glory in this one. Because from the 6 clubs we had in the playoffs, now only 4 remain, and this is the first leg. So of course we are also going to have a second leg of this matchup, and that is going to be tomorrow. So if in case even a club loses from here, nothing much to worry about. They can go back to the drawing board, come back tomorrow and best the other. But that being said, it is already match that has begun. Bengaluru FC from left to right. We've got the Gors from right to left, and let's see CJ, what does he have in store for us tonight? शुरू हो चुका है सेमीफाइनल 1। एक तरफ बेंगलुरु एफसी, ऑन द अदर हैंड एफसी गोवा। पर हाँ, एक चीज तो जरूर कहना ही होगा कि एफसी गोवा के कोच आए हैं तो उनका देखिए वो तो करेंगे बात, लेकिन सीजे वो कह रहे हैं ये हम अकेले ही काफी है। आए, कुछ मिनट हुआ, पहला गोल वो स्कोर कर गए, और उसी के साथ डिफरेंस इधर क्रिएट हो चुका है। अपोजिट में कौन है? वंशज शर्मा, एंड उनको आप रोक रहे हो, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और सीजे वो करना शुरू कर चुके हैं। Yeah, I mean, it was just those first 5 minutes of the game, and CJ just goes around and scores a goal against a club that is undefeated so far. And CJ, I think, he's been angered, right? He's in the mood, and he is wanting to win his first individual game of the night. And you could see that relentless aggression sort of setting in. This is where V Sharma really needs to take a pause and really needs to think of how does he deal with such a menace that CJ can certainly be. Another attempt on goal, which is gone out for a corner. आज सीजे को देख के लग रहा है कि वो आज जो है वो फुल मूड पे है, स्पेशली ऑन दिस गेम।
क्योंकि उनको पता है, देखिए ये जो पहला पहला लेग है, ये पहला लेग आप फ्रीली खेल सकते हो। आप अपने हिसाब से जो है वो इस गेम को ले सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अभी जस्ट कहने के वो मोमेंट है, वो स्टेज बनना शुरू हुआ है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा वो सब। और अगर आप शुरू में ही जाके डोमिनेट करने लगो, तो वो सारा का सारा कहानी कहने के आपके लिए एक फेयरी टेल बन जाता है। तो वही चीज़ फिलहाल के लिए सीजे करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर का वो एग्रेशन वो बाहर निकल के आ रहा है। बट इस बार अटैक पे भी शर्मा धीरे-धीरे करके बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन बॉल कंट्रोल काफ़ी बेहतर तरीके से होल्ड कर रहे हैं। बट इस बार एक छोटा-सा गलती उनके लिए भारी पड़ सकता है। एम्बापे टू गोली, 1 टू पास निकल चुके हैं रोनाल्डिन्हो, बट नो, वो ऑफसाइड पोजीशन पे थे, तो उतना जल्दी ट्रांजिशन पे नहीं जा पाए, जिसके वजह से इधर जो डिफेंस है वो एक बार फिर से स्ट्रक्चर हो चुके हैं एफसी गोवा। And Visharma is one of those players who kind of plays a little narrow there. But right now, CJ again finding some room, and that is a low-driven shot. Directly goes to the far post, and it is the second goal for CJ. He is spitting fire right now. And sometimes when you kind of wonder, this beast has finally been unleashed. And the first game against, when you saw him go up against Genesis, it was a different affair, right? Genesis somehow managed to pull off a win, but feels like that was just a warm-up game for CJ. Now he's got his hands hot, and V Sharma, unfortunately, he's bearing the wrath of it. देखिए, 2 चीज़ होता है। एक बार अगर हम लोग इधर पूरे फ्रेम के ऊपर नज़र डालें, तो इधर दिख रहा है कि यस, एफसी गोवा को बैक करने के लिए लाइक उनके कोच हैं, जो जिनके ऊपर है सारा का सारा लाइक गेम में क्या गलतियाँ हो रहा है वो समझ रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इधर बैंगलोर एफसी के फ्रेम के ऊपर अगर नज़र डालें, तो वो सब काम इन दोनों ही प्लेयर को करना पड़ रहा है। तो इससे एक चीज़ होता है, या तो आप डर जाओ, या फिर आप प्रेशर ले लो कि हाँ, उनके पास तो कोच है, या फिर आप और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ। उनके पास कोच है तो क्या हुआ? अभी तक हम अकेले करके आए हैं, आज भी कर सकते हैं। तो सीजे आज भी वो कर रहे हैं। वो 2 गोल ऑलरेडी दाग चुके हैं, और वो जस्ट अपना एग्रेशन इधर दिखा रहे हैं, और उनके फेस पे वो भूख दिख रहा है कि यस, हमको जाना है फाइनल पे। तो शुरुआत कुछ उस तरीके से उनके तरफ से किया जाता हुआ, लेकिन ये पॉज़ बहुत ज़रूरी था। पॉज़ के अंदर हम देख पा रहे हैं लाइक कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिया जा रहा है वी शर्मा को, एंड लेट्स सी लाइक इसके बाद, इस पॉज़ के बाद क्या चेंजेस निकल के आता है। बट एज़ ऑफ नाउ 19 मिनट के टाइम के ऊपर 2 गोल कंसीड कर चुके ऑलरेडी एफसी गोवा। Yeah, and look at CJ, right? Instantly went for the striker drop back. So he's going to have his forwards kind of coming back and helping a little bit in the defense, helping a little bit in that build-up as, all right, whatever Vanchaj had been planning, whatever has been the instruction of his coach, seems like CJ does not really care. All he wants is to, kind of go on a rampage. And he's already begun doing that. In 20 minutes, 2 goals scored already, and feels like this CJ that we've been longing to see is finally here, right? There hasn't been a moment where I can say that V Sharma is trying to even take control of the game, because CJ has been absolutely flawless. A little bit of a ball roll scoop over there, a back pass on towards Hakimi to root bullet. Again, that build up, that CJ standard build up, and then he will go for a direct shot, which he had done in the past. Again, making it work. A green time finesse finish. We don't care about what the call is from the other side. CJ, he's just gonna do his thing. He is gonna get on the path of crushing V Sharma, and he is doing exactly that. This is unbelievable stuff. साग्निक एंड सीजे हर एक गोल स्कोर कर रहे हैं, और उनके मॉनिटर के बीच से जो छोटा सा जगह मिल रहा है उधर से देख रहे हैं, ओह एफसी गोवा क्या फेस पे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। तो यही होता है, लाइक वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस गेम को, 66% पोजीशनिंग के साथ डोमिनेट कर रहे हैं इस गेम को, और उसी के साथ ये तो ऐलान कर चुके हैं जो कुछ भी हो जाए हम एग्रेसिव खेलेंगे। 3-0 30 मिनट के ऊपर। ये वो प्लेयर हैं जो कि मल्टीपल गोल स्कोर करते हैं, बट आज वो मल्टीपल गोल ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं, और अभी जस्ट पहला 33% का गेम जो है वो खत्म हुआ है। अभी भी 66.66% गेम बाकी है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन टाइम। बट वी शर्मा क्या वो इधर से कम बैक कर पाएंगे? वी नो बहुत टफ है,
बट हाँ, ये इसके पहले बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे, बट नो, देखिए गलत था टच, और जो बिल्डअप हो रहा था काउंटर पे वो सारा का सारा इधर ही खत्म हो गया। सारे किए कराए पे पानी फिर चुका है इस समय. I mean, for FC Goa, kind of feels a little scary right now. Honestly, I've never seen V Sharma being broken down like that, battered into pieces as CJ is en route with another attack. A beautiful driven pass there, but thankfully V Sharma reads it really well. Needs to launch a counter, needs to get himself back into the game because it's still 38 minutes. It's the early stages of the game. 3 goals, knowing V Sharma's caliber, he can do it, but he needs to put a stop at this aggression being shown by CJ first. देखिए पहले हाफ पे लाइक शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या लाइक एक बहुत क्लोज गेम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि हम सोच रहे थे कि वी शर्मा ही जीत जाएंगे डायरेक्टली या फिर सीजे, लेकिन क्लोज ये गेम कोई भी एंगल से नहीं दिख रहा। जिस तरीके से सीजे खेल रहे हैं, इधर गिरते पड़ते वैंडे सार अपने आप को संभाले, नहीं तो ये भी एक गोल होता हुआ दिख सकता था सीजे के तरफ से। बट हालांकि काउंटर पे फिलहाल के लिए वी शर्मा राइट हैंड साइड से रन निकल चुका है, हकीमी के तरफ से ओवरलैप पे जाने की कोशिश था, लेकिन वो अटैक शायद बिल्ड होते होते ही कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से आज डिफेंस किया जा रहा है वो काफी अच्छा। वर्जिल वैन डाइक मेसी तक बॉल पहुंचने से पहले ही एक इंटरसेप्शन देखने के लिए मिला, रोनाल्डो का रन, बट थियो के साथ 1-2 करते हुए दिखे लियोनेल मेसी एंड सीजे। कहने कि वो आज अपने अंदर का जो सोया हुआ एक शिकारी था उसको जिंदा कर चुके हैं, उनको बाहर निकाल के आते हुए दिख रहे हैं। सागनिक साइड से एंजॉय कर रहे हैं उनके टीममेट का ये डोमिनेशन, और सागनिक के चेहरे पे वो गोल्स के बाद छोटे छोटे स्माइल्स, वो देख के लग रहा है कि यस, उनका जो कोशिश था वो अभी धीरे धीरे करके सफल होता हुआ दिख रहा है। इसलिए सीधे 5 गोल मारने, उससे ज्यादा मत मार, फिर कोप में शायद दिक्कतें हो सकती है, या फिर जितना तुझे अच्छा लगे उतना मार ले। आज मूड में तू जी ले जिंदगी, मतलब वैसा वाला सीन हो चुका है अभी इस समय, क्योंकि बेंगलुरु एफसी बॉयज एंड गर्ल्स, आई हैव गॉट टू टेल यू, दिस इज अ सीजे we haven't seen for a long time, and he's kind of making a Mickey out of V Sharma. And as hurtful it might sound, you know, if you've followed V Sharma's and FC Goa's campaign, they've never been tested like this. Of course, V Sharma, we've seen him drop a few games, but not like this. The quality of that goal with Ruud Gullit, I think this is one of the similar goals Bengaluru FC scored against Hyderabad FC in the co-op matchup, and this is where I think Charanjit has been forced to get into his arsenal to show what he has to offer. Just when the coach might have said, he's trying to get into your heads, getting into your final third, he's going for those quick passes, you could see him dribble through. You need to watch out for that. Then next moment you see him scoring a goal outside the box. A beautifully green time finish, shot to glory. And how do you deal with stuff like that, right? And for V Sharma, he needs to get back his composure. And I still said, like, you still have 45 more minutes to go, but in the next 10 to 15 minutes, V Sharma ought to score one. Otherwise, Charanjit is going to put him down for good. गेम शुरू होने से पहले एक इंटरव्यू हुआ था, और उस टाइम पे वी शर्मा ने कहा कि लेकिन उनके अटैकिंग थर्ड पे काफ़ी ज़्यादा मदद हुआ है कोच के थ्रू, लेकिन सीजे शायद उसी टाइम पे सोच लिए थे कि तुमको तो आने ही नहीं देंगे अटैकिंग थर्ड पे, फिर आप कैसे यूज़ करोगे। बट देखिए अभी तक एक भी अटैक करने ही नहीं दिया गया था, और जिसके वजह से अभी वी शर्मा बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि वी शर्मा ओ माय गॉड, इधर स्लाइडिंग टैकल, बॉल छीन लिया जा चुका है रोनाल्डिनियो से, बॉल इधर थ्रू किया जाएगा टुवर्ड्स एम्बापे, ये हो सकता है चौथा गोल, और ये हो भी जाएगा। विद दैट 4-0, सीजे ऑन फायर। बेंगलुरु एफसी पहला गेम कहीं ना कहीं अपने नाम कर चुके हैं। Right now, Sagnik might be scared of his own teammate only. He had never seen this version of CJ. Where was he? I mean, look at him fighting for the goal, for the ball in that midfield. He is 3-0 up. V Sharma under tremendous pressure. He's sort of adding insult to his injuries over there, and he's not letting him breathe. So much constant pressing coming up. He's stealing the ball, then those triggered runs, everything to perfection. And what do you do when you're V Sharma right now? You have to bow down to the king. And CJ,
He's asserting, he's commanding that level of respect. And V Sharma is being toyed with over here, but still trying to create some chances with Ronaldinho with R9. Takes the shot. And this is the closest V Sharma could get in terms of scoring right now. And CJ, he's just feeling himself. I mean, this is one of those days when a player he's at the peak of his form and it's very difficult to play against. And now look at even Adi Zima had to chime in. Now they have a professional coach, specially designated to make sure these players get the victory. But when you're 4-0 down already, starting to ponder what the call-outs would be, what would he be suggesting at this moment? आई थिंक आज सारा ब्रिलियंस टीजे के सामने फीका पड़ता हुआ। टीजे आज अपने धुन पे डांस कराते हुए देख रहे हैं पूरे एफसी गोवा के साइड को, नॉट ओनली वी शर्मा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इधर वी शर्मा को इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, इधर हम लोग को आदि जिमा की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस देते हुए देखने के लिए मिले, लेकिन आज कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्योंकि अगर एग्रेशन को रोकना है तो आपको एग्रेसिव होना होगा, जो एग्रेशन करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो वी शर्मा हम देखते हैं पहले हाफ के एंड तक कम से कम 3 शॉट्स तो वो ऑन टारगेट ले ही लेते हैं, पर ये उनका पहला हो सकता है। पर ये फिर से सेव किया गया विद वैन डे सार। आज सीजे पूरा रेडी है, उनका हाथ, उनका ब्रेन, उनका आँख, सब कुछ ऑनलाइन एक जगह पे आ चुका है, फोकस्ड है फुल्ली, वो क्लीन शीट के साथ खत्म करना चाहते हैं इस गेम को। But you know what? I'm kind of liking the body language from V Sharma right now. No, he's getting a little deadly. He's trying to create those chances. He's already created two. There is going to be a point where he scores that first one, and from there onwards, needs to hold that on, and will have to carry it forward. But up until the point, CJ, if he scores a few more, then it is rest in peace there. But look at the control that he's exercising as the fifth one also gets netted in. Oh, this is getting painful to watch at this point. This is getting humiliating for the Gors as Bengaluru FC, they are taking them on a ride right now. And imagine what is going through V Sharma's head at this point, right? Throughout the league stages, they were looking phenomenal. They were flawless. Nobody could beat them. And suddenly, in the playoffs, it's a similar storyline of what happened to East Bengal FC last time around also. But, Bengaluru FC, I'm starting to get scared of this club right now. Imagine what's going to happen in the co-op. Now, that is FC Goa's strongest suit. If they crumble over there, oh, it's going to be a long night for the Gors. With Ronaldo, one more time, one more shot, but इस बार वैन डे सार सेव कर लिए, नहीं तो 6-0 हो सकता था। बट आई थिंक कि बेंगलुरु एफसी आज उनको ये जो मैचअप है वो जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये लेग नंबर 1 उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना भी इधर बात कर रहे हैं कि इस पूरे इंटायर सिनेरियो के बारे में, या सीजी अपने ब्रिलियंस इधर दिखाते हुए, लेकिन वो एक्स्ट्रा कोच रहने का जो एडवांटेज है वो शायद एफसी गोवा को आज रात ये गेम खत्म करके जाने के बाद मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वो जो एनालिसिस है वो निकल के आएगा, वो इंस्ट्रक्शंस निकल के आएगा, बट ऑन द गेम आपको लाइक प्लेयर के ऊपर छोड़ना पड़ता है। उतना जल्दी आप क्या ही चेंज कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि बेंगलुरु एफसी जब शुरुआत इतना अच्छा हुआ है, उनको आज ये लेग जीत के जाना चाहिए, ये लेग अपने पास एक तरफा रख के जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा, बट देखिए एक और बिल्डअप पे जाते हुए सीजे रुडली, तो कोशिश था एम्बापे के लिए, बट एम्बापे पोजीशन पे नहीं थे और बॉल चला गया बैकलाइन के बाहर। Yeah, I think at this point, FC Goa will have to just get over the horrors and look forward to the co-op game, because CJ has absolutely dominated in this matchup. It's 5-0 already, and no matter how many goals V Sharma scores at this point, there's no chance that they can get back into this game, right? And look at CJ go again with Jude Bellingham. He's toying around. Now he gets that room and space, that freedom to experiment, to do whatever he wants. And once it starts clicking for you as a player, once you start figuring out your opponent, know what he's up to, then it's so easy.
And CJ, we were constantly talking about this. He's one of the best players in the entire SA region, not just in India. And when you could kind of raise questions that how is he losing his individual battles? Now this is where he's finally decided to answer his critiques as he's just breaking through the defense for fun, just getting past the defenders just like that. And V Sharma seems like he's got no answer for him. Again, a run with Hakimi towards Mbappe, wanting to go for a pass on towards R9, but received again. And this is a press that's so difficult to deal with. A step over, nice reverse elastico chaining those skill moves, and there you go. The final whistle blows, and it ends the trauma for FC Goa over there as Bengaluru FC. What a phenomenal start, and even Shagnik is like, bhai, kya hi khela? And this is where they really need a break. But do they have enough time? Because up next is going to be Co-op, FC Goa's strongest suit. They need to strike back, TT. देखिए, एक चीज़ जो कि इधर हम लोगों को देखने के लिए मिला, वो है मेनली फॉर्मेशन। फॉर्मेशन अभी तक एफसी गोवा की तरफ से, स्पेशली वी शर्मा की तरफ से हम लोग को 2 देखने के लिए मिले हैं। एक है वो या तो 5 एट द बैक जाते हैं या फिर वो 4 पे चेंज कर लेते हैं और 4 पे चेंज करके वो बहुत कम दिखा है 4 पे चेंज करते हुए। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आई थिंक हम लोग को 2 गेम पे देखने के लिए मिला था, एक सैकी के अगेंस्ट और एक देखने के लिए मिला था मोस्ट प्रोबेबली इमाद के अगेंस्ट, जब इमाद के खिलाफ गए थे। उस दोनों गेम्स को छोड़ के कहीं न कहीं ज़्यादातर वो यूज़ नहीं किया है और आज शुरुआती 1 गोल कंसीड करने के बाद ही हम देखे थे कि 5 एट द बैक से 4 एट द बैक होते हुए वी शर्मा को एंड आई थिंक वो उनके लिए उतना काम आया नहीं है और उनका जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेसिंग था, बहुत ज़्यादा अ, ऊपर लेके चले गए थे और काउंटर पे बैक बैक देखने के लिए मिला है और नॉट ओनली दैट आज सीजे का जो फॉर्म था, जो मोमेंटम था, वो भी कुछ अलग लेवल पे था। तो आज तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया वी शर्मा की तरफ से क्योंकि ये गेम जिस तरीके से खत्म हुआ है, इस गेम का पूरा प्रॉपर जो आउटकम है, जो आफ्टर शॉक्स है, वो शायद हम लोग को co-op के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। Yeah, I think at this point, this is where FC Goa need a hard reset. Like after you lost your game 5-0, it's such is the format which gets so tormenting sometimes for these players. They have to instantly recover because up next they know they've got that co-op matchup that they'll have to play, right? And this is where V Sharma needs to gather himself, needs to put all his thoughts into the second matchup because still not a lost cause for FC Goa because we have also seen them in this situation on multiple occasions. There have been those days where V Sharma tends to drop his games and then they suddenly recover in the co-op. Now this is going to be one of the most important matches of V Sharma's career. This time he's playing in the playoffs for the second time and he will have to settle at nothing other than making a slot secured for the grand finals. But in order to do so, they have to win this co-op matchup and they will have to ensure the man in form Adi Zima gets to best Sagnik. And if he can manage to do that as well, then Bengaluru FC things will turn for them. So co-op game is of the utmost importance. But looking at the style of play, like you said, TT, I completely agree with you because it's just not about the formation. It was about how fearlessly CJ was playing, right? He knew what he had to do. He was just connecting every single dots and he was making sure he went out to score those goals. And uh, V Sharma had no answers. His defense was completely all over the place. And even when the situation arose, when he had this little conversation with his coach, when he said, it's looking a little slim there, you need to close in those gaps. What does CJ do to reply? Scores a finesse shot outside the box with Rude Hullet. And this is done for the second time, just by the way. बट देखिए वी शर्मा अभी तक एक बार भी क्लीन शीट के साथ लाइक वो 0 गोल्स के साथ तो खत्म नहीं किए थे अपने पूरे एंटायर ईआईएसएल सीजन के अंदर। वो चाहे ड्रॉ हो, जीते, हारे, कुछ भी हो जाए, वो 0 गोल के साथ फिनिश नहीं हुए थे बट आज उनको एक सिंगल गोल करने का मौका नहीं दिया गया है। चीज़ें शुरू किए थे उनके सीजन उनके ही करीबी दोस्त सारांश को कुछ इसी तरीके की सिचुएशन के साथ जिधर उनको भी एक सिंगल गोल स्कोर करने का मौका नहीं दिया गया था।
उधर तो एक शॉट सिंगल मारने शॉट भी तक नहीं नहीं कर दिया पाए थे। था। हाँ, हाँ। तो उस जगह से फिर भी इधर वी शर्मा 2 शॉट्स हम लोग को ऑन टारगेट लेते हुए देखने के लिए मिले। तो देखिए 5-0 जो वी शर्मा दूसरे प्लेयर्स के साथ करते हुए दिखते हैं, आज उनके साथ हो गए तो आई थिंक हाँ, यही यही वो मौका है जिधर शायद एफसी गोवा उनका जो ये अनबीटन स्ट्रीक था, वो शायद टूटते हुए दिखे। बट हालाँकि अभी भी को-ऑप गेम बाकी है और को-ऑप पे एफसी गोवा शायद वन ऑफ द बेस्ट क्लब है जो कि एकदम धुआंधार परफॉर्म करते हैं। सिर्फ और सिर्फ विश शर्मा के लिए नहीं, आधी सीमा के लिए भी क्योंकि आधी सीमा मेनली वो प्ले मेकर रहते हैं उस पूरे को-ऑप गेम के अंदर। तो देखते हैं लाइक को-ऑप के अंदर क्या होता है। बट जिस तरीके का कॉन्फिडेंस लेके आए हैं ना, मुझे लग रहा है कि बेंगलुरु एफसी चाहेंगे और शायद वो करते हुए दिख भी सकते हैं एक तरफा विन। You know, it could happen. It could happen, but I'm not gonna just count my chickens so fast, right? Because at this point, I still believe that FC Goa are a better co-op unit. I know what has happened is something we have never seen previously in during the league stages. You know, V Sharma has not been insulted like this. But when it comes to the culmination of Adi Zima also coming into the picture, I think FC Goa are one of the strongest co-op units. I still feel they've got that mental grit and they can just turn things over because for FC Goa, the winning conditions are as such that they are supposed to win this one. And then, I kind of believe that Adizima can repeat what he has done against Sagnik. He's such a phenomenal player. Now, what are you expecting out of FC Goa in this game, right? You're going to expect all those longer through balls coming in. You're going to see those German crosses being delivered by Adizima. And for Vanchach, we certainly do know that he's one of the good finishers of the game, and if he gets a chance, he's not gonna miss. Right in the final third, he knows how to dribble past the defenders. So now FC Goa finally, it feels like they've been truly tested. They know they have got an enormous uphill task ahead. They have to climb, and this is where the coach is like, "What's done is done. You need to focus on the second game." And yeah, Sharknik and CJ, they're like, "Come on, bring it up. We are ready for you, Lord." दोनों ही क्लब्स अब यही तैयारी कर चुके हैं और अगर हम लोग बात करें प्लेयर्स की आई थिंक जो अभी जूम का पारा है वो थोड़ा डाउन हुआ है और दोनों ही क्लब्स जो है दोनों ही लाइक चारों प्लेयर्स अभी थोड़ा चिल्ड वे पे खेलेंगे जरूरत है बट वी शर्मा उनको सबसे पहले जरूरत है रीसेट की क्योंकि अगर उनके बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि हाँ 5-0 देन उनके लिए मुश्किल होगा सो क्या वो माइंड के लाइक उनके माइंड पे क्या वो रिसेट हो पाया है वो देखना बहुत जरूरी होगा उसी बात के चलते इधर को गेम का आगाज हो चुका है लेफ्ट टू राइट इधर बेंगलुरु एफसी देखने के लिए मिलेंगे राइट टू लेफ्ट अटैक करेंगे एफसी गोवा बट एफसी गोवा के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस गेम पे एटलीस्ट वो गोल स्कोर करे और उसी के साथ साथ जीत के जाए I think for FC Goa, what's going to be really important is they need to keep a little bit of possession of the ball because for what I've seen from Bengaluru FC is that they're not, giving them that room to breathe. Also, always constantly under their neck, and they're just constantly putting that pressure. Like at this moment, you would see somebody charging for the ball, and gets so difficult, right? But FC Goa, a little bit scrappy, but still they're holding off pretty well as they are starting to slowly but surely build their play up. Now, from that right wing with Hakimi, they're trying to find some of those openings. Yes, with Ronaldinho, they've done a good job, but Van der Sar just steps out of his line and instantly pounces for the ball. As Bengaluru FC realize that this co-op game isn't going to be easy, FC Goa still are totally into this. बिल्कुल और उसी के साथ कहने की जिस तरीके का फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ यूज किया जा रहा है दोनों ही क्लब्स की तरफ से वो दोनों का फेवरेट फॉर्मेशन है लाइक जिसके थ्रू अभी पूरे सीजन पे खेला गया है बट इस बार बेंगलुरु एफसी विद मेसी अंदर चले गए थे अटैकिंग थर्ड पे कोशिश था रोनाल्डो को पास देने की बट वो डिफ्लेक्ट हुआ बट खतरा दिखे टला नहीं है बट लूसियो इतना ऊपर कैसे आ गए लूसियो इधर इतना ऊपर आना मतलब अगर बॉल गलती से भी जाता है एफसी गोवा के पास देन वो इधर फुल्ली दौड़ते हुए दिखेंगे काउंटर के लिए लेकिन उसके लिए पहले बॉल मिलना भी चाहिए लेकिन बेलिंगम अपने फिजिक के चलते उछलते हुए बॉल छूने और फ्री किक मिलेगा बहुत डेंजरस पोजीशन पे
Considering the form that well CJ is, he's gonna fancy his chances, and well, with Rudhulit, I'm not gonna be surprised if he goes for a Trivela, but instead finds some room for Ronaldinho, and Van der Sar saves it. All right, 16 minutes up, it's not looking one-sided. Both these powers in play, they are clashing against each other. You could see the sparks flying, and FC Goa are looking much better in this co-op match. जी हाँ, आखिरी कहीं न कहीं कुछ मिनटों की अगर गेम की बात करें, तो बेंगलुरु एफसी एक बार फिर से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चढ़ के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फुल्ली प्रेस करके और बॉल पोज़ीशन भी उनके पास है। देखिए, शुरुआती 5 मिनट छोड़ के, बाकी के अगर 15 मिनट की गेम के ऊपर बात करें, तो कहीं न कहीं दिखा है कि बेंगलुरु एफसी आज सोच के आए हैं कि बॉल कुछ भी हो जाए, उनको नहीं देना है और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एकदम 1-2 पास पे डायरेक्ट चले गए। आज पास काफ़ी ज़्यादा खिलाया जा रहा है और वो पासेस जो है वो ऑन पॉइंट भी देखने के लिए मिल रहा है। विद लियोनेल मेसी जो एम्बापे एक गोल हो सकता है। पर इस बार वैन डे सार सेव करते हुए दिखेंगे। एक बार फिर से एफसी गोवा के ऊपर जस्ट कहीं न कहीं वो चोरी जो है वो झूलता हुआ दिख रहा था बट गिरा नहीं, गिरने से पहले बचा लिया इधर वैन डे सर। Oh yeah, and at this point, still chances alive. Wanted to go for a pass, I think, on towards Kylian Mbappe, but well read by the Gors, and they've managed to at least not concede a goal, if not score one. And Bengaluru FC, it was kind of a little rough start, but seems like they're again getting themselves into the groove with Kylian Mbappe. This is a golden chance. Oh, I thought maybe a little bit of a heel to heel there, or some space being created could have enabled them in trying to take a shot. But the Gors need to respond back. They've gotten in Cap de Villa a little bit ahead with Rude Hullet. They want to get their men up before they can, just go in for the final blow there. But 28 minutes into this game, folks, we are yet to find that opening goal. We are yet to find the deadlock being broken between these two clubs. But seems like neither of them wants to concede. And Bengaluru FC now, this is a Oh, subliminal pass with Kylian Mbappe. wow! Nice ball roll scoop and an outside footer. Green time finish. This does not get better than this, and it surely did have CJ written all over it as Bengaluru FC go 1-0 up. What a performance from Bangalore FC और Bangalore FC से साग्निक एंड सीजे दोनों ही काफी ज्यादा खुश हैं and क्यों नहीं होंगे लेकिन वो जिस तरीके से एक ऐसे क्लब के अगेंस्ट जा रहे हैं जिनको आज तक कोई हरा ही नहीं पाई ईआईएसएल सीजन 2 के अंदर उनको जस्ट वो एक तरफा डोमिनेट कर रहे हैं तो खुशी तो होना ही बनता है और वो खुशी इधर दिख भी रहा है पहले 33 मिनट्स का गेम इधर ऑलरेडी खत्म होता हुआ डिफ्लेक्शन इधर आता हुआ नहीं तो कहीं न कहीं कोशिश था टुवर्ड्स रोनाल्डिन्हो बॉल भेजा जाए बट वो हुआ नहीं है। देखिए आपका मैनेजर या फिर आपका कोच आपको बाहर से तो सब इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, लेकिन हाथ में कंट्रोलर लेके खेलना तो आपको ही होगा। तो उस जगह पे जब प्लेयर्स आ रहे हैं एक-दूसरे के अगेंस्ट उसमें कहीं न कहीं बैंगलोर एफसी आज बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। Yeah, and when you've got a coach like Justice too, quite an accomplished Englishman, right? He's coached Lok Manu also in the past. He's also gone on to coach Stokes from UK, who's kind of who's also won the E-Prem once, but that was long time ago. So FC Goa reaching out to him, having him in this, in their lineup this time, you could see those massive differences being made, and this sort of makes me feel happy as to how much the clubs are investing for the players, how much work is being put down the ground to kind of not just work them through inside the game, but also to tell them how to cope with pressure right now, because FC Goa is starting to feel the heat even in this co-op match. And let me remind you folks, now if Bengaluru FC win this game, it's done and dusted right here right now. FC Goa will go back home, back to their hotels, will have to figure a way to deal with CJ tomorrow in the second leg. So they're still not out of the competition. If they manage to win tomorrow and lose tonight, then there will be an additional co-op game played, which will decide the fate of both these clubs. But for now, as things stands, 38 minutes into the game,
And Bengaluru FC are looking also deadly. Another chance for a cutback, a beautiful build up, but Virgil van Dijk at the last moment forces out a tackle, but Oh! Lionel Messi takes a shot, but nice defense. The keeper coming for the rescue as it goes out for a corner. Shorter one taken by the players of Bengaluru FC. A step over, ball roll before they go off to any sort of shenanigans. Out it goes for yet another corner. यार कहीं ना कहीं एफसी गोवा का डिफेंस जो है वो ताश के पत्तों की तरह दिख रहा है। टॉर्नेडो की तरह आ रहा है इधर बैंगलोर एफसी का अटैक, जो कि पूरा उड़ा के लेके जा रहा है उनके डिफेंस को। तो थोड़ा-सा इधर देख के खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आखिरी कार्ड जब उड़ जाएगा तब इनके लिए सेकंड गोल भी आता हुआ दिख जाएगा बेंगलुरु एफसी की तरफ से। सो बेंगलुरु एफसी आज हर एक बॉक्स को जो है वो टिक करते हुए दिख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है एफसी गोवा, क्योंकि यूजुअली जब वो खेलते हैं वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं खेलते, वो थोड़ा चिल्ड वे पे खेलते हैं, बातचीत करते हैं। जब हम लोग ऑन कैमरा उनको देखे हैं जब ऑनलाइन गेम्स चल रहा था, बट आज बहुत ज़्यादा फोकस है एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी अपने ऊपर ले चुके हैं। और देखिए वो अनबीटन का जो टैग आपके ऊपर एक बार आ जाता है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और एक हद तक आपको जाके कहीं न कहीं प्रेशर में भी डाल देते हैं, क्योंकि सबका एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे एक्सपेक्टेशन के तले आप प्रेशर में आ जाते हो, लेकिन वही बात है, इधर सब कुछ खेल है मेंटालिटी का, कि आप किस तरीके से वो सारे प्रेशर को साइड में रख के आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हो। Yeah, indeed. And that's exactly how legends are forged, right? You can either decide to be brittle and break down when it matters, or you could learn from that, embrace it, and then go on to create magic, right? And FC go up. Like you said, I completely agree with you. Such has been the expectations, not just from the players, but also from the fans that, having that flawless run in the league stages kind of gets that added pressure on you to perform every single time when they come into play. They will have to not just play to win, but also have to play to keep their undefeated streak. But CJ was quite vocal. He said, past records do not really matter. Now you've come to land, you've come into my jungle, you play by my rules. And Sharknik, he's more than happy to have a teammate like CJ right now, and not taking anything away from Sharknik. He's a phenomenal player as well. But now all he's gonna do is just channel. He's just gonna manifest what CJ has been doing. And so far, even in the first half, initially it felt like FC Goa, they have something up to offer. But after those first 15-20 minutes, I think Bengaluru FC have again started taking control over the game. Now this sort of thwarts me into thinking, TT, where are those longer balls that FC Goa are quite famous for delivering? You could see Adizima loves to switch plays like that, and he kind of creates so much space. But that is something that's not happening. Bengaluru FC are not giving them that room and space to execute any such things. या क्योंकि देखिए अगर आपको लॉब थ्रू बॉल्स खिलाने हैं, उसके लिए आपको डिफेंस से कोई ना एक प्लेयर जो है, लाइक मिडफील्ड से कोई ना कोई प्लेयर जो है उनको रन निकालना होगा। वो मौका ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि बैंगलोर एफसी हर टाइम रेडी है। आप बॉल निकालने जाओगे, उस टाइम पे आपको टैकल करके बॉल छीन लेते हैं, तो उस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो खुलने का मौका ही नहीं दे रहे इधर एफसी गोवा को, एंड उसका ही कहने के रिजल्ट इधर देखने के लिए मिलता हुआ 1-0 से एक बार फिर से बैंगलोर एफसी आगे हो चुके थे, और वही स्कोर लाइन अभी भी बना हुआ है। और ये चीज हम लोग नहीं भूल सकते कि पिछले गेम पे, या लाइक वी नो कि सीजे इधर 5-0 से हराते हुए दिखे एफसी गोवा को, बट वो अभी खेल रहे हैं वो कोऑप गेम के विन की वजह से और सागनिक के क्लच के वजह से, क्योंकि सागनिक अगर क्लच नहीं करते तो शायद वो इधर सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे होते। तो कहीं ना कहीं सागनिक का भी कॉन्फिडेंस आज एकदम अलग लेवल पे पहुंच चुका होगा, और सीजे के वो 5 गोल देखने के बाद तो सागनिक आज वो उनको पता चल चुका है कि हाँ, आज का दिन तो हमारा है। तो कहीं न कहीं उस कॉन्फिडेंस को तोड़ने की ज़रूरत है एसी गोवा को, क्योंकि अगर एसी गोवा को कमबैक करना है, तो ये को-ऑप तो जीतना ही होगा 2 गोल स्कोर करके, और उसी के साथ-साथ आदी ज़िमा को उस लेवल पे शुरुआत करना होगा कि सागनिक का जो कॉन्फिडेंस है वो तोड़ पाए, क्योंकि दोनों ही प्लेयर आज फुल ऑन देखने के लिए मिल रहे हैं कॉन्फिडेंस में, बट इस बार काउंटर पे, बट वर्जिल वैन डाइक है, बॉडी पे, वो देख लेंगे फिजिक के थ्रू। Yeah, he'll deal with it somehow or the other. As Bengaluru FC want to put FC Goa to rest at this point, with Kylian Mbappe has now found some room with R9, but this time nice defending.
Nice defending. We need more of this. You need to restrict the players of Bengaluru FC because they're starting to flow like water, and they're starting to feel themselves. It's very difficult to try to get yourself back into the game, but the players blocking each other off. That was such a nice attack, which was in the making for the Gors, but Bengaluru FC kind of were there. The defense ever so alarmed now with Ronaldinho. What avenues are they going to resort to? Nice room with Kylian Mbappe, a little bit of a step over, but instant defense comes up by Lucio there and stops the attack right then and there. Out it goes for a corner. So at this point, a little bit of a pause being taken. Few more words from Stu coming in, telling his players what is required, what needs to be done. I'm kind of really hopeful to see one of those longer aerial balls being given by Adizima and V Sharma scoring, because even V Sharma has realized, this is a Bengaluru FC that is not supposed to be messed with, right? And you need to put a blockade at the momentum that they're playing with, right? Especially after such a close victory against Hyderabad FC. They felt like, this could have been a job that would have been rather easier, but it is completely the other way around. Sometimes you get mentally crushed after just playing a best of three a couple of hours ago, and suddenly you are in another best of three which could decide your fate, and Bengaluru FC have risen up to the occasion. बैंगलोर एफसी लाइक उनको पता है कि आज का गेम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए और वो उसी तरीके से इधर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। आखिरी 30 मिनट्स बचा हुआ है। अगर इधर कोई भी गोल स्कोर नहीं किया जाता है Nice. एफसी गोवा की तरफ से, देन कहने के सिनेरियो इधर ही खत्म हो जाएगा। 2-0 से पहला लेग जो है वो जीतते हुए देखने के लिए मिलेंगे बैंगलोर एफसी। बट हाँ, इधर एक कोशिश था लॉब थ्रू खिलाने की, बट उसी के साथ उसको रोका गया। बट जो चेंजेस है वो करना शुरू कर चुके हैं और ये चेंजेस का कितना फायदा मिलेगा वो तो गेम चलते हुए हम लोग को पता चलने वाला है। All right. Erling Haaland has been bought up by Bengaluru FC. You could see already they've gone for a more defensive formation, the 5-4-1 being exercised. And we know what we can expect, right? It's a little defensive there. You've got your left wing backs and your right wing backs. But I think Bengaluru FC will be primarily hoping to play on those counter attacks, right? They would be hoping that, FC Goa kind of tend to make one of those aggressive plays. And in doing so, make themselves a little bit vulnerable, because this is one of those points where you either go for a 4-2-4 or more of a 3-4-3 and the other attacking formations that we do have, right? And when you do that, you sort of expose your players defensively. So that is where I think Bengaluru FC might be looking forward to strike. But nice build up. Oh, had that gotten to Eusebio, things could have been completely different. आह देखिए इधर शुरुआत हुआ है पॉज के बाद और जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्लेयर्स को दे चुके हैं और जो भी फॉर्मेशन पे चेंजेस था वो भी सब कुछ कर चुके हैं। अभी टाइम है वो फाइनल स्टेज का, लाइक फाइनल टाइम अभी आ चुका है। देखिए इधर से और ज्यादा कुछ है नहीं ऑप्शंस, कम से कम एक गोल स्कोर करना ही करना है इधर एफसी गोवा को। बाहर देखिए बॉल कंट्रोल में नहीं रख पाए, बॉल गया थ्रो लाइन के बाहर। दैट मीन्स इधर होगा थ्रो, शुरुआत होगा और बॉल कंट्रोल रहेगा एफसी गोवा के पास। एफसी गोवा के पास एक ग्लोरियस चांस है ये कि इसी बिल्डअप पे आप इधर गोल स्कोर कर दो ताकि आपको थोड़ा और टाइम मिले एक विनर दागने की। बट नो, इधर जगह नहीं दिया जाएगा। कैप्टेविया थियो हर्नांडिस के जगह पे लेके आया गया है और जब आप फ्रेश लेग को लेके आते हो उनका एआई तो रहता ही रहता है और उसी के साथ उनका फिजिक भी और उनका स्टेमिना दोनों ही बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि वो बहुत Whoa. तेजी से मूव कर पाते हैं। और उसका फायदा देखिए, लेफ्ट विंग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था विद दिस गोल। इधर फाइनल नेल रख दिया जाएगा कॉफिन के ऊपर और विद दैट कहने के कह सकते हैं ये एक 2-0 विक्ट्री होता हुआ दिख सकता है बेंगलुरु एफसी के लिए। Yeah, that was such a well composed finish there by Bengaluru FC. You could see, right? It was those low driven shots that are pretty much in the meta, and Van der Sar faces that issue to deal with that. I think CJ and Sagnik are well aware of it, out of which they are taking some
huge advances. And not just that, the sheer run, they kind of forced it out. I think getting Capdevia a little bit up over there, and somehow managed to possibly make it work. And with just 3 minutes to spare, I don't see FC Goa coming back into this. I think they will have to ponder on their loss. They will have to contemplate, introspect on what's gone wrong, what could have been done better, because Bengaluru FC, they are surely, setting standards over here of what they've come to accomplish when it comes to LAN, and especially when the stakes are higher than ever. देखिए, मुझे ये समझ नहीं आया, लाइक 1-0 था, जिस जगह पे चेंजेस आया बैंगलोर एफसी की तरफ से, लाइक लेफ्ट साइड पे 2 प्लेयर्स को लेके आए और वो 2 प्लेयर्स लाइक हालैंड थे एंड कैप्डेविया थे। देन लाइक क्यों राइट साइड पे क्यों खेल रहे हैं जिधर बैंगलोर एफसी के 2 न्यू फ्रेश प्लेयर्स आए हैं? वो इधर लेफ्ट हैंड साइड से अटैक कर सकते थे लाइक लेफ्ट विंग के ऊपर से, जिधर जो पुराने प्लेयर्स से थोड़ा स्टैमिना कम था। आई डोंट नो, लाइक वो समझ में नहीं आया, बट हाँ, उसी के साथ बैंगलोर एफसी 2-0 इधर कर चुके हैं उनके लेग नंबर 1 को। और कहीं ना कहीं फिक्चर्स, एक चीज तो देख के पता चल चुका है कि बैंगलोर एफसी जो भी प्लान करके आए थे सबका सब ऑन द लाइन काम आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऑन द अदर एफसी गोवा उनका एक सिंगल प्लान अभी तक काम नहीं आया। Yeah. And this is where I think a little bit of a redemption, maybe trying to get themselves back when Adizima goes up against Sagnik. But there's nothing to do over here, nothing to salvage, because FC Goa have to humbly accept their defeat. And yeah, this is the point where Bengaluru FC, Sagnik will just be playing for fun, right? At this point, he's completely without any pressure, and this is a perfect chance where he kind of goes out to seek his revenge against what Adi Zima did to him last time. Because what was the differentiating factor? V Sharma and CJ, the previous encounter, it ended as a draw. But in the co-op game, that is where CJ and Shagnik, they were beaten. And this time, the scoreline is completely different. It's a 2-0 scoreline for Bengaluru FC. And there you can see, right, in the first leg, Bengaluru FC have managed to successfully get past FC Goa. But the second leg is still there. For all you Gore fans, I think tonight is going to be a longer one for the lads, because they will have to not just lose their sleep, prepare for the matchup tomorrow, because that will eventually decide, because the winner, whosoever of this fixture, goes on to become the first grand finalist of our eISL Season 2. देखिए, एज ऑफ नाउ 2 गेम्स ऑलरेडी जीत चुके हैं बेंगलुरु एफसी, बट जो ये गेम नंबर 3 है, ये गेम नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये लेग नंबर 1 है, सेमीफाइनल लेग नंबर 1। सो जितने ज़्यादा मैचेस आप जीतोगे ओवरऑल पे, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। एग्रीगेट पे 2-0 तो हो चुका है, और अगर ये सागनिक जीत के जा पाते हैं देन ये 3-0 के साथ खत्म होगा। एंड कल के दिन पे अगर एक भी गेम, एक सिंगल गेम भी अगर आप जीत जाते हो विद बैंगलोर एफसी की अगर हम लोग बात करें, तो उनके लिए कहीं ना कहीं फाइनल्स का जो रास्ता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। बट ये आखिरी गेम, गेम नंबर 3, दोनों के लिए ही, दोनों ही क्लब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एफसी गोवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदि जीमा अगर इधर से इस गेम को नहीं निकाल पाते देन कहीं ना कहीं उनके लिए पूरा का पूरा जो सेमीफाइनल लेग 1 है, डे 1 है, वो सारा जो है वो साउथ चला जाएगा। और उनके लिए फिर, हाँ, आपने एकदम सही कहा कि रात जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा लंबा तो अभी भी होने वाला है, लेकिन अगर ये गेम हार गए देन वो शायद सो ही ना पाए टेंशन में। Yeah, I mean, रातों की नींद तो छीन ली है अब सीजे और शाग्निक ने। अब देखते हैं कि आखिरी गेम में क्या होता है, बिकॉज शाग्निक, he's been waiting for this moment, right? Because the last time when they faced off against each other, it was a 5-3 scoreline, and out of which Sagnik even conceded 2 penalties. So I think the horrors are still, reeling in front of him, and this is where Sagnik gets to take his sweet revenge on Adi Sima. But for Adi Sima, it is much more than that. It is about to establish or assert dominance. Like, hey guys, you are dealing with a team, or rather a club, that hasn't lost a single game in the league stages, and you cannot just get away with those 2 victories, right? He has to send a message out, not just to his opposition but also to his fans, like, guys, still I'm here, still I'm playing,
we're not gonna lose, we're not gonna fall, and I'll do everything, whatever it takes. जिसे बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ आजमा लीजिए, यहाँ पे उनको किसी भी हाल में जीतना ही जीतना है. तो right now, for what's about to come, I kind of felt like FC Goa a little lackluster in this co-op game, because the kind of variations of attacks that they kind of pose to their opponents, this was completely missing. It was kind of always a trap being set by Bengaluru FC, and they were running into it, and it never felt for a moment that FC Goa was starting to take control. Yes, they started off pretty well, but once Bengaluru FC figured their way through, and there was no stopping them. There was not a point where I could say, yes, FC Goa is winning the balls in those midfields. They're contesting for it, because Bengaluru FC literally made their lives hell, to be honest. And this is where I think, Adi Zima, like, आज तुमने बहुत ट्राई कर ली, अब थोड़ा सा बदला लेने का टाइम आ चुका है. And he's a coach himself, also has been coaching outside of eISL in those past couple of months, so he knows exactly what needs to be done. But the man himself, he's a phenom, CJ. Now he gets to enjoy, right? He's done his job. He's given them quite a commanding lead over here in the first leg, has asserted that 2-0 victory against FC Goa. But let's see in this final matchup what awaits us. या दोनों ही प्लेयर्स कहने के लाइक दोनों क्या चारों के चारों प्लेयर्स अभी बातचीत कर रहे हैं, बट देखिए वी शर्मा कहने के वो दुखी जरूर है, और ये घायल वी शर्मा है. कल कैसे वापसी करेंगे वो तो हम देखेंगे, बट आज के दिन पे जिस तरीके से खेल रहे हैं बेंगलुरु एफसी, वो शायद पहले से घायल होके आए थे. वो सोच के आए थे कि आज तो कुछ ना कुछ करना है ऐसा जिससे कि सब लोग अचंभित हो जाए. तो वही चीज कहने के इधर हम लोग को नजर आता हुआ. बट एज ऑफ नाउ साग्निक, जो कि पिछले गेम पे जो नॉकआउट गेम था उस पे वो क्लच करके आए हैं. 1-0 से पीछे थे, फिर 2-1 के साथ खत्म करते हुए दिखे, और वही कारण थे इधर कहने के हैदराबाद एफसी के वापसी का, और उनके eISL सीजन 2 से बाहर जाने का जो रास्ता है वो साग्निक के हाथों से ही दिखाया गया था. बट इस बार हारी है एफसी गोवा का. क्या एफसी गोवा को भी वो उस तरीके से झेल पाएंगे? और स्पेशली आदि जीमा, जो अभी तक का कुछ वो लॉन्ग बॉल्स, फिर सरप्राइजिंग प्लेज, लाइक जो पासेस है जो कोई भी शायद पहले से नहीं सोचता, वो सब कहने की करते हुए देखेंगे. और उसके बाहर फिक्सेस, एक चीज अगर हम लोग देखें तो शायद साग्निक एंड आदि सीमा दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए खेलते हैं eISL के बाहर. Yes. और उस जगह पे कहने के साग्निक और आदि सीमा दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं. कहीं ना कहीं ये वही वाली बात हो गई. गुरु द्रोणाचार्य आए हैं, एकलव्य अभी ट्रेनिंग ले चुके हैं, अब हाथ भी, एक उंगली भी सौंप दिया. अब देखते हैं इनके खिलाफ किस प्रकार खेलेंगे, राइट? एंड एट दिस पॉइंट, राइट, Adi Zima, we know he's a tested player. He's one of those players that kind of goes out and gives his all, and you could just say, if it comes down to individual skills, right, Adi Zima has barely lost any matches, and he is one of the reasons why FC Goa have always remained undefeated. We, like I've said, constantly been harping upon this one thing. There have been moments where V Sharma has been tested. There have been moments where a few players have managed to beat him. But when it comes down to co-op, I think there has been not even a single club that's better than FC Goa. But tonight, things have changed. The winds, the directions have turned. And for now, ladies and gentlemen, we are off with our final game of this fixture. It is going to be an individual matchup. Bengaluru FC represented by Sagnik, and you've got FC Goa represented by Adi Zima from right to left, as Sagnik right off the get-go looks for that pass, but time taken by him was a little too much, and there you go, the attack gets squandered. शुरुआती 3 मिनट के अंदर वो जब पहला वो पास खेले, वो पहले पास से ये कहने के
एक अटैक बिल्ड करना शुरू कर दिए थे और ये अटैक ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और ये मैंने देखा है लाइक फीफा 23 के अंदर, वो चाहे 23 हो या फिर 22 कोई भी एडिशन हो, उसके अंदर आप अगर पहले अटैक को एकदम प्रॉपर्ली फिनिश कर पाते हो ना, वो गोल आ ही जाता है 3 मिनट के अंदर और उससे प्रेशर पूरा शिफ्ट हो जाता है और जो इधर पास के साथ शुरू करते हैं उनके तरफ से ही आता है। तो ये मूव हम लोगों को पिछले eISL सीजन 2 के अंदर बहुत बार देखने के लिए मिला और इस बार भी देखने के लिए मिला, लेकिन जो मेन गेम है वो अभी शुरू होता हुआ दिखा। आधी सीमा लेफ्ट हैंड साइड से विथ लियोनेल मेसी, एक रन जरूर निकाले, नटमेग कर दिए रोनाल्डिनियो को, बट कॉर्नर मिलेगा। एक डिफ्लेक्शन था छोटा सा जिसके वजह से कॉर्नर आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। बहुत देर के बाद एफसी गोवा फाइनली देख के लग रहा है कि वो एक अटैक का बिल्ड करने के लिए जा रही है, क्योंकि वो चाहे वी शर्मा हो या फिर वो कोऑप गेम हो, दोनों में से कोई भी गेम पे ज़्यादातर अटैक हम लोगों को दिखा नहीं है एफसी गोवा की तरफ से, बट इस बार एफसी गोवा आधी सीमा पहला गोल अपने लिए दागते हुए इंडिविजुअल गेम पे और उसी के साथ डूबते नैया को कुछ करते हुए कहीं के अभी भी तैराते हुए दिख रहे आधी सीमा। पहला गोल आ चुका है और सागनी के ऊपर प्रेशर तो नहीं कहूंगा, बट हाँ थोड़ा बहुत चिंतित जरूर होंगे क्योंकि ये 2 लेग का गेम है और सागनी की तरफ से यही कोशिश रहेगा कि वो इधर से जीत के जाए और 3-0 करके जाए, बट आधी सीमा को हराना उतना इजी नहीं है। आधी सीमा के अटैक को देखिए, 4 प्लेयर्स जा रहे हैं, 4 प्लेयर्स अटैक पे इन्वॉल्व हो चुके हैं। लियोनेल मेसी, जॉर्ज रूडुलित, राइट हैंड साइड से ऑलरेडी बेलिंगम का एक रन निकलता हुआ दिख रहा था, बट पूरे देर के लिए बॉल होल्ड करना ज्यादा पसंद किए आधी सीमा। हकीमी टुवर्ड्स रोनाल्डो, बीच में और शॉट, सेकंड गोल और आधी सीमा अपना जो टाइटल है, जो सब उनको दिए हैं द मैजिक मैन, वो मैजिक इधर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब जब लगता है कि शायद अभी और नहीं हो पाएगा, उसी टाइम पे वो उभर के आते हैं। इसके पहले वी शर्मा शायद ज़्यादा गेम्स हारे नहीं है, लेकिन ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ के बाद कोऑप में भी ड्रॉ होता हुआ दिखा है, लेकिन क्लच जो है वो हर बार आधी सीमा की तरफ से देखने के लिए मिला है और आधी सीमा आज हो सकता है कि ये मैचअप जो है वो उनके हाथ से निकल चुका है ये लेग 1 का, लेकिन फिर भी आखिर में जाके वो अपने सर्वाइवल के लिए और अपने क्लब के प्राइड के लिए लड़ते हुए इधर 20 मिनट के अंदर 2 गोल ऑलरेडी उनके तरफ से आ चुका है। बट बेंगलुरु एफसी, उनका क्या, सागनिक जो इतने अच्छे फॉर्म में थे, जो क्लच करके दिखाए पिछले नॉकआउट गेम पे, उनका क्या वो कमबैक कर पाएंगे, क्या उनके तरफ से एक गोल आता हुआ दिखेगा, वो ही अभी देखना होगा। लेकिन आधी सीमा वो बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहते। लेफ्ट हैंड साइड से लियोनेल मेसी, मेसी के साथ बिल्डअप, फिक्सेस, एक और गोल होता हुआ दिख सकता था कुछ देर पे अगर ये पास इंटरसेप्ट नहीं किया जाता तो। Thunderstorms here at Gurgaon because, to be honest, this is terror striking right in the hearts of Sagnik, because this is something that you would not ideally expect. Quick succession goals scored by Adizima. That is a player that you're talking is capable, is worthy of lifting this trophy as he's en route to find his third. Nice chain of passes with Rudolitz. You can see that run getting triggered. Nothing coming out of it. With Mbappe, it feels like it was all a ruse again. Oh my goodness. I felt for a moment maybe the ball gets poached over there. But no, that did not happen. So Sagnik is starting to feel the heat. And a quick reminder, folks, once again, you know, if Adizima wins this one, he still keeps hopes alive. Because whoever in these 2 legs wins 4 games is going to make it to the grand finals. And right now, long pass. Now this is something that we've seen Adizima do a lot, and he's made this work. He loves to play on those long passes. He loves to go on with the crosses. He scored goals out of it. But Sagnik needs to get himself back in. Nice player lock coming in from R9, and there you can see that little bit of an impatience being displayed by Sagnik, and just like that, this attack has been thwarted off. आधी सीमा सागनिक को कहने की पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि सागनिक क्या करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा चांस था, बहुत शानदार थ्रू बॉल भी खिलाए थे सागनिक, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं हो पाया।
अटैकिंग थर्ड पे वो पास जो है वो प्रॉपर नहीं जा पाया, बट विथ लुशियो इस बार के लिए डिफेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करते हुए दिखेंगे। लेकिन आधी सीमा देखिए, जो 2 गोल्स करना स्कोर करना था वो कर चुके हैं। वो अभी अगर गोल स्कोर नहीं भी करते हैं, फिर भी उनके लिए चल जाएगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा एक मूव था विथ हेडर, बट उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए और लाइक बैंडेसार से दूर नहीं रख पाए, जिसकी वजह से ये गोल होता हुआ नहीं दिखा है। बट सागनिक उनको बाय एनी हाउ लाइक कोशिश तो उनका यही रहेगा कि वो इधर से अगर जीत नहीं पाए फिर भी एटलीस्ट एक ड्रॉ के साथ खत्म करे। अगर ड्रॉ के साथ खत्म करेंगे देन एक चैन की नींद जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पाए देन कहीं न कहीं उनके लिए भी वो खतरा जो है वो ज़रूर बना हुआ रहेगा। Of course, I mean, he has to kind of score one back. Even if he loses this game, it's okay. But he just cannot let Adizima trample over him. Because for tomorrow's fixtures, I'm kind of starting to wonder what a nice chance was in the making. So coming back into the conversation, this is where the debate arises. Should Adizima be the one who faces CJ? Or is it going to be Vanshaj who takes another dig at CJ and tries his luck? Because this time CJ, he was miles ahead of Vanshaj. But there you go, Adizima, so difficult to deal with as the attack was still on. But Sagnik pressing in with Virgil van Dijk and just thwarts it out of play, and a beautiful recovery we get to see from FC Goa, and little lightening of the mood over there as CJ advises Sagnik of the job, the task that needs to be done. From here onwards, I'm pretty sure, I mean, it's you can't really rule Sagnik away, because just the first half, and we know Sagnik is a player that can instantly turn the tides in his favor. So at this point, let's see what happens, what the conversation is going to be from both the sides. Stu making sure he has Adizima with all the advices that's necessary to kind of bury down Sagnik. But CJ, we know he's played at the highest level, so he also has some of that experience to work around with, and he's given his words of wisdom, and off we are. The second half commencing right now. सेकेंड हाफ शुरू होते ही कैप्टिविया के जगह पे हर्नांडिस को लेके आया जा चुका है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा पेस, और उसी के साथ वो एग्रेशन कहने के लेफ्ट विंग से हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा इस बार। बट ऐसी गोवा उनके लिए अभी इस पर्टिकुलर गेम के अंदर तो सब कुछ सही चल रहा है, बट सागनिक उनकी तरफ से अभी क्या नहीं आएगा। 4-4-2 के फॉर्मेशन पे अभी शिफ्ट कर चुके हैं सागनिक, और यही सेम फॉर्मेशन हम लोग को पिछले गेम पे भी देखने के लिए मिला था, जिधर वो सेंट्रली बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। एक बार फिर से हम लोग को वही देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए बॉल पोजीशन रखना, बॉल को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। वही शायद कोशिश करेंगे सागनिक इस बार के लिए। लियो मेसी टुवर्ड्स रोनाल्डो, बट इधर मिलिटाओ चौकंदे बनने बॉल मिला था कुछ देर के लिए, बट डिफ्लेक्शन की वजह से बेलिंगहम के पास गया, जिसके थ्रू बॉल गया आउट ऑफ कंट्रोल, और इस बार के लिए अटैक पे जा रहे थे गोवा। बट देखिए बहुत ज़्यादा बॉल छीना जा रहा है, बॉल लाइक एंड टू एंड गेम, एंड टू एंड एक फीफा हम लोगों को एज ऑफ नाउ देखने के लिए मिलता हुआ। लेकिन सागनिक वो डेडलॉक कब ब्रेक कर पाएंगे अपने लिए, वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Yeah, and you know, the way things are going right now looks very difficult for Sagnik, right? I think, you know, I can't see him quite poised. He's fighting for the ball, he's doing whatever needs to be done, but if Adizima breaks down like this, oh, that was a nice run triggered with Kylian Mbappe, right? He even just tapped his right analog stick a little ahead to get that extra burst of pace, and in doing so kind of lost control. So regardless, he's back on his attack once more with Lionel Messi, Theo Hernandez. You get that Hindi style of play also. His longest strides also being taken really quick on the counter attack. That's what you get with Theo Hernandez. Whereas Capdevila is more of a balanced left back. That's what I can say. But for now, I mean, mere 30 minutes remaining into the game as Bengaluru FC still trying to search for a goal. And you can see with Mbappe, nice pass. This has to go in. Wow. Indeed, it does. A beautifully well-crafted goal. He was not expecting this, Adizima, and Sagnik
strikes out of nowhere. 2-1 the scoreline. साग्निक इसके पहले भी एक बार क्लच किए थे, क्या एक बार फिर से हम लोग को देखने के लिए मिलेगा उनके तरफ से? देखिए इस बार सीजे एकदम क्लोजली गेम को फॉलो कर रहे थे एंड उनके तरफ से थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस आते हुए साग्निक की तरफ एंड साग्निक उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसा एक मूव था जो कि साग्निक शायद अपने नॉकआउट गेम पे और इस गेम पे दोनों को मिला के भी यूज नहीं किया एंड शायद उनके लाइक जो भी लाइक लीग स्टेज के गेम्स है उस पे भी यूज किए होंगे क्योंकि लॉन्ग बॉल ज्यादा हम लोग को दिखते नहीं है साग्निक की तरफ से। बट आज जिस तरीके से ये पास था टुवर्ड्स एम्बापे ये एक्सपेक्टेड नहीं था आदि सिमा की तरफ से। सो 2-1 जो कहीं न कहीं अभी तक का सब कुछ एक लेवल पे आके एफसी गोवा के लिए सही चल रहा था इस गेम के ऊपर, उधर एक बार फिर से वो डिफरेंस को कम करता हुआ बेंगलुरु एफसी को सिर्फ और सिर्फ एक गोल चाहिए इक्वलाइजर दागने के लिए और एफसी गोवा के जितने भी खुशियों का मंजर था कुछ देर के लिए आखिर में ही सही उसको भी डुबाने के लिए। Yeah, and at this point, Sagnik really needs to start feeling the thunder. He's gotten Aloverin. We know with Aloverin, you get that burst of pace. Now, instantly just charging through that left wing. Will look for that ball roll scoop into a cutback. Wanted to just backheel and pass it on towards R9. But unfortunately, I think Adisima just read through him. And from here onwards, it's still a 2-1 scoreline. That's up, folks. At this point, it's so difficult to say where we're going off next because in the next 20 minutes that remain into this game, Bengaluru FC have scored one. I won't be surprised if I see an equalizer. And even if Sagnik can pull off a draw out of this game, I think Bengaluru FC will take it with open arms. But Adizima seems not to let it happen. And a little bit of a confusion there. And I felt he would have gone. It was better if he had gone for a shot then and there only. I felt that extra pass was quite unnecessary. And as a result of which, FC Goa will have to start building up their attack once again. आज अगर देखा जाए तो साग्निक का लक उनका साथ देता हुआ दिखा है बार बार, सिर्फ इस गेम के ऊपर नहीं इसके पहले भी। तो आज का दिन कहीं ना कहीं साग्निक का है। क्या एक विनर तो दूर की बात है लेकिन इक्वलाइजर पहले आएगा कि नहीं वो देखना होगा या वो आएगा आदिजिमा की तरफ से वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी। लुशियो टुवर्ड्स रोनाल्डो के रन तो आ चुका है एम्बापे की तरफ से लेकिन कोशिश यही था। बट आई थिंक अल्वारेन के लिए वेट कर रहे थे बट अल्वारेन टाइम पे हाई नहीं थे जिससे कि वो पास खिला सके। हो जाता है कभी कभार मिसमैच रन पे और उसी का कहीं ना कहीं फायदा इधर मिलता हुआ एफसी गोवा को। 79th मिनट का इधर गेम चलता हुआ आखिरी 10 मिनट का गेम देखने के लिए मिलेगा विद एडेड टाइम शायद 11 और 12 मिनट बचा हुआ है इस गेम के अंदर। ये लास्ट मोमेंट कुछ जो ड्रामा अगर आ गया देन वो बहुत सारा मजा आएगा। ओह माय गॉड बट नो वे, थोड़ा और आगे जा सकते थे बट श्योरली आ गया, सेव किया गया वेंडेसार की तरफ से। एक अच्छा मौका था बेंगलुरु एफसी के पास कि वो इक्वलाइजर करे बट वो धीरे से हाथ से फिसलता हुआ। Yeah, even Sagnik knows that this was a chance. Had to keep a little bit of a composure there in the final third. And had he even green timed that, I felt like would have given him that extra shot power and that accuracy. The curl would have been perfect. But unfortunately did not happen. And this is as close as he gets. But still, for a short corner. This is on to which Ronaldinho goes for a cross. But Rude Hullet, as long as that player is there, it's so difficult to find the right pass. And now with Erling Haaland, he's going to break free, unleash the shackles that have been binding Adizima for so long. He's been kept at bay, hasn't been scoring those goals anymore. This could all change right here, right now. The chance still alive with Jude Bellingham, passing it on towards Rude Hullet, Erling Haaland. A little bit of a room and space, but who does he pass on to? And then taking the time to think about it, Bengaluru FC have taken the ball away. And this is what you would expect when you're Sagnik right now. You need to, start dictating the pace of the game. You cannot just dance to Adizima's grooves. And I think Sagnik in the second half has shown exactly that.
आखिरी 2 मिनट का गेम बाकी है और आधी सीमा पता है उनको क्या करना है। यस, बॉल ने पास रखना है लेकिन नहीं, कॉर्नर हुआ। पहुंच जाएगा सागनी के पास। क्या अभी भी ड्रामा बाकी है इस गेम के अंदर? वो हम लोग को कुछ 2-3 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं? बट नो, बॉल इधर थमा बैठे एफसी गोवा के पैरों पे। अभी भी बॉल है। डेविड चिनोला, एम्बापे गलत पास था, फिर भी उनके पास है। डेविड चिनोला, रोनाल्डिनियो, गॉड फाइनली जाके एफसी गोवा के सांसों में सांस आएगा और एफसी गोवा शांति से अभी बैठ सकेंगे, क्योंकि ये ना ड्रॉ पे खत्म हुआ है ना लॉस पे। वो एक गेम जीते हैं। सो 2-1 का स्कोर लाइन है फर्स्ट लेग के ऊपर। एग्रीगेट पे क्या होता है वो कल देखा जाएगा। बट हाँ, आज जो सिनेरियो देखने के लिए मिला है, बेंगलुरु एफसी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तो नहीं बट हाँ आगे है एफसी गोवा से। You know, this was necessary for FC Goa to get a win in the third match at least, right? And a little bit of a reassurance that yes, the fans will feel rested tonight, because the kind of a course that we're chartering to, honestly, over here, TT, is the fact that the Bengaluru FC were looking so dominating, and somebody needed to kind of put them down back at their places. Bring their foot right to the ground. And I think Adi Zima did a good job. But it was in the first half. Those two quick successive goals kind of helped Adi Zima to get that win. But if this match had prolonged for an extra 10 minutes, I'm pretty sure Sagnik would have scored an equalizer then and there. And then we never know where this match could have gone. But regardless, again, for all those fans who get up confused with what the format is going on, the semi-finals are divided into two legs. This was the first leg, and the rules for victory are whichever club gets the first 4 wins qualifies to the grand final. So let's say now, as things are, it is 2-1 scoreline. Tomorrow we see them in League 2, and that is where anything in Leg 2, and that is where things could change. But we'll talk about that. But let's take a look at who the MVP was of this first leg. And any guesses, TT? Really? आई थिंक या कौन होगा सीजे के खिलाफ, बट चलिए नजर डाल ही लेते हैं। और ये सीजे ही हैं और 5 गोल उन्होंने स्कोर किए थे, वो भी वी शर्मा के खिलाफ। शुरुआत तो इन्होंने ही दिलाया है। जो फील है बेंगलुरु एफसी को, वो तो यही प्लेयर ने दिलाया है इस पूरे सेमीफाइनल लेग 1 के अंदर। तो यस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ आज का ये पहला लेग खत्म होता हुआ। और सागनिक की भी अगर बात किया जाए, सागनिक हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में वो थोड़ा क्लूलेस तरीके से खेल रहे थे कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है या फिर उनको क्या करना है, वो उनको समझ नहीं आ रहा था। बट जो सेकंड हाफ था, वो सेकंड हाफ काफी ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, एक बहुत पॉजिटिव नोट पे दोनों ही क्लब एंड के आज के ये लेग नंबर 1। Yes, and still a lot of work to do, right? And now the big question is where I kind of rack my brains. Who's going to face CJ tomorrow? Is it going to be Vanshaj again, or is it going to be Adi Seema? But whatsoever, I think we will have to wait for the mystery to unfold. But that being said, folks, we are done with this fixture. But hey, hold on. We still have one more semi-final leg to go, which will happen after this short little break.